Hello dear students. The next poem in your course is Blow Blow the Winter Wind. This is the third poem we are dealing with. And Blow Blow the Winter Wind is written by William Shakespeare, who is known as the universal dramatist. Universal dramatist क्यों बोलते हैं हम इनको? Because in the 16th century, he has written about such kind of themes, such kind of ideas which even exist in the present times. जो इनके plays की basis या central ideas रहे हैं उस time, जो इनके plays के crux रहे हैं उस time, वो जो themes हैं वो आज के life में भी exist करती हैं. That is why we say that Shakespeare is a universal dramatist. अब poem शुरू करने से पहले there is a background to the poem जो आपको अच्छे से समझनी है. Blow Blow the Winter Wind is a song first of all. ठीक है? And it is being sung by Emmons. क्या याद रखना है? It is a song sung by Emmons. Emmons कौन है? Let me tell you. ये जो song है, this has been taken from his comedy. विलियम शेक्सपियर की जो कॉमेडी है, मैं इसको अंडरलाइन करूंगी क्योंकि बुक है, ड्रामा है. It is a comedy by him. As you like it. Now, in this drama, what happens? There is a king, Duke Senior. Duke Senior, Duke King को बोलते हैं. And this Duke Senior was the elder brother, जिनको unlawfully धोखे से अनलॉफुली उनके यंगर ब्रदर ने, यंगर ब्रदर कौन था? फ्रेडरिक. क्या किया उन्होंने? उनको एग्जाइल में भेज दिया. फ्रेडरिक यंगर ब्रदर ने धोखे से अपने एल्डर ब्रदर को एग्जाइल दे दिया, देश निकाला दे दिया. एंड नाउ ड्यूक सीनियर इज इन द फॉरेस्ट ऑफ आर्डन. क्योंकि फ्रेडरिक ने निकाल दिया इनको किंगडम से, राइट? तो ये कहाँ रह रहे हैं? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में. और उनके साथ उनके कोर्टियर्स हैं, राइट? एंड एमन्स और एमिनस इज वन ऑफ हिज कोर्टियर्स who is singing this song, Blow Blow Thou Winter Wind. अब थीम की बात करें, चाहे प्ले की या इस पोएम की भी, द थीम इज ingratitude, जिसको हम बोलते हैं thanklessness. Being the elder brother, ड्यूक सीनियर ने बहुत कुछ किया था फ्रेडरिक के लिए, बट अल्टीमेटली फ्रेडरिक ने क्या किया? अपने एल्डर ब्रदर को धोखा दिया और धोखे से उनको किंगडम से निकाल दिया. सो एमन्स जो ये गाना गा रहे हैं, उसका नाम तो ब्लो ब्लो द विंटर विंड है. तो व्हाट इज द लॉजिक? लॉजिक ये है कि शेक्सपियर ने क्या किया है कि जो इनग्रैटिट्यूड है या जो थैंकलेसनेस है उसको कंपेयर किया है किससे? कोल्ड वेदर से. दैट इज वाई ब्लो ब्लो द विंटर विंड. कोल्ड वेदर के एग्जाम्पल्स उठा के he will tell you that winter wind is sharp, तीखा होता है, चुभती
है ठंड, है ना, ठंड लगती है ना. इट इज शार्प. उसका शार्प होना क्या है? नेचुरल है. बट द ingratitude of your friends, of your family members is unnatural. It is hurting. This is the idea behind the poem. कोल्ड वेदर का एग्जाम्पल उठा के, विंटर वेदर का एग्जाम्पल उठा के उन्होंने उसको कंपेयर किया है इनग्रैटिट्यूड, थैंकलेसनेस ऑफ द फैमिली मेंबर्स एंड फ्रेंड्स फॉर दैट मैटर. सो थ्रू दिस एग्जाम्पल ही हैज ट्राइड टू explain you how ingratitude hurts a person. Okay, I hope background आपको समझ आई हो कि क्या है. एंड बैकग्राउंड ना भी याद रखो, वो समझने के लिए जरूरी है, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस दैट इट इज अ सॉन्ग sung by एमिनस. एमिनस कौन है? ही इज द कोर्टियर ऑफ ड्यूक सीनियर. और इस टाइम वो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है, सॉरी, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में है सब लोग, एंड देयर ही इज सिंगिंग दिस सॉन्ग. सो इट सेज, ब्लो ब्लो thou winter wind. I have not missed this. Blow, blow, thou winter wind. He says, blow, blow, thou winter wind. Thou art not so unkind. इंग्लिश के जो फेजेस है ना, वो ओल्ड इंग्लिश, मिडल इंग्लिश, और अब हम जो यूज करते हैं वो है मॉडर्न इंग्लिश. सो इन द ओल्ड इंग्लिश दाउ वॉज यूज्ड फॉर यू. जो अब यू हो गया है, उससे पहले दाउ बोला जाता था. सो ही सेज, विंटर विंड, यू आर नॉट सो व्हाट? यू आर नॉट अनकाइंड एज मैन्स इनग्रैटिट्यूड, थैंकलेसनेस ऑफ मैन. यू आर नॉट सो अनकाइंड. तुम इतने अनकाइंड नहीं हो जितने वो लोग अनकाइंड हैं जो इनग्रैटिट्यूड दिखाते हैं. दाई टूथ इज नॉट सो कीन. टूथ अब यहाँ पे स्टिंग को बोलेंगे, या ठंड का जो एक फीलिंग है जो हम महसूस करते हैं. He says your tooth is not so keen. Keen मतलब sharp. Because thou art not seen. हम तुम्हें देख नहीं सकते हैं, right? So we do not know that how sharp it can. Sorry, we do not know that what is the reason of your sharpness, right? Although thy breath be rude. Though we cannot see you, but we know breath is the feeling. The winter wind is sharp. We all know that it is very cold. It is difficult to be handled. But then हम उसको handle करते हैं because we know it is something natural. फिर italics में एक song दिया है. Italics में है as he is singing. Of course पूरा song एमिनस ने ही गाया है. He says, hi ho, sing hi ho. Hi ho जो है ये एक एक्सप्रेशन है जॉय का, हैप्पीनेस का. Unto the green holy, small trees जो वहाँ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में होंगी. Most friendship is feigning. दोस्ती, फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप्स आर feigning. Feigning क्या होता है? They are pretensions, दिखावा. Feigning मतलब pretensions. Most loving mere folly, and love is also most of the times foolishness. Then hi ho the holy. So he says, then be happy. Why you should be happy? This life is most jolly, because life has to be led happily. Now through these lines in the italics, Emmons is trying to give you a message. And what is that message? That life is full of hardships. Life is full of chances where we will be hurt, where our heart will break. But हमें क्या करना चाहिए? We have to face the hardships in life. Life में जो problems आती हैं उन सबको face करना चाहिए and live life in a happy manner. This is what he means by these
4 लाइन्स जो कि इटैलिक्स में दी गई हैं. दैट फेस difficulties in life with happiness. Try to deal with them by being happy. Second paragraph. Freeze, freeze thou bitter sky. Bitter sky, clouds hain, right? And those clouds, they will slowly and steadily, they will turn into snow. Everything will be covered with snow. That dost not bite so nigh. That do not bite so nigh. Near. Nigh होता है near. बहुत नजदीक से bite नहीं करता है, but as benefits forget. अब जो freezing cold है ना, ठंड है, बर्फ है, वो या snowfall, obviously बर्फ, it is not so cruel. जो ठंड है वो इतनी cruel नहीं है. What is cruel is the benefits forgotten बोल रहा है, means the help that you gave a person. जो भी चीजें आपने अपने फ्रेंड के लिए करी, when the person forgot the help that you had done for him, so what did he show you? He showed you ingratitude. So he says the winter, the cold weather or the snowfall is not so cold. उससे इतना हमें एक हार्ट रेंचिंग फीलिंग नहीं होता है, लेकिन अदरवाइज कब होता है? दो दाव द वाटर्स वाप. दो दाव मतलब विंटर विंड को बोल रहा है, दैट यू ट्विस्ट द शेप ऑफ द वाटर. वाटर जब स्नोफॉल में चेंज होके नीचे आता है, यू चेंज इट. द विंटर सीजन, देयर इज चेंज इन दैट. दाइस थिंग इज नॉट शार्प. तो तुम्हारा जो वो एक हम जो विंटर विंड को फील करते हैं, या जो कोल्ड वेदर को हम फील करते हैं, दैट इज नॉट which I have already written, that is not sharp, and another word, that is not cruel. Okay, that is not sharp and that is not cruel, but as remembered, as friend remembered not. If a friend forgets us, if he doesn't remembers us, if he forgets whatever we did for him, that is really hurting. ये वाला hurting. Okay, इसको hurt पढ़ते हैं और इसको heart पढ़ते हैं. Remember that. Hurt, heart. I'm talking about this hurting. ठीक है? Again, वही italicized lines. Hi ho, sing hi ho, unto the green holy, most friendship is feigning, most loving mere folly. Most friendship is feigning, most loving mere folly. Then hi ho, the jolly, this life is most jolly. So he's saying that, friends, let us join together and in happiness sing this song, hi ho, unto the green holy, that we should move out in the lap of nature and enjoy it. We should face the problems in life with happiness. Friendship जो है वो क्या है? It is mere pretensions. तो हमारी समझदारी किस में है, हमारा विजडम किस में है कि हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस करें and come out of it as soon as possible. तो वही चीज ह्यूमन इनग्रैटिट्यूड के लिए भी है जो वो यहाँ बता रहे हैं. दैट जो कोल्ड वेदर है, कोल्ड वेदर जो है उसका शार्प होना नेचुरल है, तो हम उसको फेस कर लेते हैं. somehow we deal with it. We wear clothes, we use heater, we bask in the sun. बहुत सारी चीजें करते हैं हम ठंड से बचने के लिए, क्योंकि हमें पता है वो नेचुरल है. ठंड को हमने कैसे झेलना है वो हमें पता है. But this particular aspect, this human ingratitude is very difficult to be handled. फिर से यहाँ लिखूंगी, it is painful and it is hurting. तो इस बात को कहते हुए ये जो 4 लाइनें इटैलिक्स में हैं उससे हमारे को एमिनेस मैसेज देते हैं दैट फ्रेंडशिप बेशक फॉल्स है,
कई बार प्यार भी जो है, लव भी जो है ना, लव इज नॉट जस्ट बॉय गर्ल्स लव, बट लव इन द फैमिली, लव विद फ्रेंड्स, लव विद योर चिल्ड्रन, ऑल दिस इज फूलिशनेस, राइट? सो विजडम किसमें है? बी स्ट्रॉन्ग, face the problems in life, face the hardships in life, and stay happy. So that is the main idea behind this poem. And using, क्या किया है शेक्सपियर ने? शेक्सपियर ने विंटर विंड का एग्जाम्पल लेते हुए आपको समझाया है कि ह्यूमन इनग्रेटिट्यूड को फेस करना इतना आसान नहीं है. विंटर विंड को हम फिर भी फेस कर लेते हैं, बिकॉज उसका जो एक अपीयरेंस है वो शार्प नहीं है, राइट? वी कैन फेस इट बिकॉज इट इज नेचुरल, बट दिस वी कांट फेस बिकॉज इट इज पेनफुल एंड इट इज हर्टिंग. So that is all for the poem. Thank you.